Good morning, Ashish. Share with your friends. Let them join. Good morning, Shubham. Radhe Radhe. Amar Adhe, Amar Adhe. Morning, Somit. Bro, sir, dialogue ta mono. Moro ko dialogue. Good morning, Monalisha. Good morning, Payal. Hello, no one. अरे एमिति ना काहेंगी रखो. No one. Who are you? Male or female? Should I address you as him or her? Or them or they? कौन? बास्तरी जेंडर बनिगलानी. So, no one. Is this your first class? भाग्य खराब ଥିଲେ अच्छा हाँ क्लास रे कोई ओके मॉर्निंग ऑफ थ्रोन्स I thought Mr. Nobody रो फैन थी no one body different उफ, चलो shall we start अच्छा ओके चलो let's start as you all know हमरा daily MCQ practice class चलची rather revision तो आज ही geography अच्छी and without any delay let's start and telegram ମାନେ ଆମର ଯଦି class pdf and other resource ପାଇଁ regularly group ରେ updates होची so join those okay good morning Panchanan chalo start so this is the first question here today which among the following types of forest biomes can be seen extensively in the areas of western ghats tropical evergreen forest montane forests tropical deciduous forest horn forest I'll give you 30 seconds try to answer and then we'll discuss. अरे बाबू ऑप्शन इज देयर इज ऑप्शन बी हमारा इंडिया रे लेट्स गो राइटर उल्टी व्हाइट बोर्ड करिया नेशन ऑफ राइट is divided in 5 categories कौन have deciduous forest rather tropical
tropical thorn forests have then forests, then finally we have floral swampy. Evergreen रे we have two types, roji tropical evergreen और roji evergreen. Okay, deciduous रे we have two types again, moist roji dry. Thorn forest रे किसी category नहीं. Then we have two categories, roji northern mountain forests जोटा आम हिमालयन कहे आउ गोटे हूँ सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट जोटा को आम वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट रे देखु. ठीक अच्छे. नाउ सी ए क्वेश्चन टा एक्चुअली टिके ऑड फ्रेमिंग हिची कारण दीटा को ही ठीक हो. और जो माउंटेन फॉरेस्ट रहिला स्पेसिफिकली द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट हमो क्वेश्चन रे कोन पचारला जे which of the types which of the following types of forest biomes can be seen extensively in the area of western ghats. Western ghats रे हमें evergreen forest तो देखुचे ता सहित हमें deciduous भी देखिया पाउछ. ओके प्लस शोला फॉरेस्ट भी और रादर शोला ग्रासलैंड्स भी देखिया पाउछ. तो the more appropriate answer here would be mountain forests. हला जो माउंटेन फॉरेस्ट रहिला सेटा कोन कहली मु दीटा टाइप रो अछि. गोटे होची नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट आउ होची सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट. तो जो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट रहिला सेटा विषय रे पर डिस्कस करिया. सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट फर्स्ट कथा हवा कोन नहीं जो सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट रहिला सेटा हमें वेस्टर्न घाट्स रो किछि पार्ट रे एंड और सह्याद्री रीजन और अदर नॉट सह्याद्री विंध्यास पाखे देखुचे. ठीक अच्छे. देन ये जो सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट रहिला यार कैरेक्टरिस्टिक कोन एल्टीट्यूड हिसाब रे डिवाइड हिची. एल्टीट्यूड बेसिस रे डिवाइड हिची इनटू थ्री सेक्शंस. रोजी लोअर रोजी मिड एल्टीट्यूड और रोजी हाई एल्टीट्यूड. लोअर टा केते लेस देन 1500 मीटर, मिड होची 1500 रु 1800 मीटर्स, देन हाई होची 1800 मीटर्स रु अधिक. ठीक अछि. सी माउंटेन एवरग्रीन हो माउंटेन सी गोटे जिनस तमे सब बळे मन रखिबो कोन ना एल्टीट्यूड मिक्स लैटिट्यूड. तो गोटे माउंटेनस रीजन रे तमे माने तीन चारि प्रकार रो फॉरेस्ट देखिया को पाई परियो. ठीक अछि. माउंटेन फॉरेस्ट अंडर रे डिफरेंट डिफरेंट टाइप रा देखिया को पाइबा. जेमति कि हमर रहिला जो लोअर लेवल से हमें बहुत रेनफॉल देखिया को पाउचे. ठीक अछि. बहुत रेनफॉल जे because we are witnessing a lot of rainfall एठी हम पूरा देखुचे प्रॉपर एवरग्रीन और जोटा को हमें कहउचे ट्रॉपिकल एवरग्रीन. ठीक अछि. मीडियम लैटिट्यूड रे हमें कोन देखुचे सेमी एवरग्रीन जोथरे की बोथ एवरग्रीन ट्रीज एंड डेसिडुअस ट्रीज मिलन. हाई लैटिट्यूड रे हमें देखिया को पाउचे शोला फॉरेस्ट और शोला ग्रासलैंड्स. शोला ग्रासलैंड्स कोन ना ये जो हाई अल्टीट्यूड एरिया रे तमे एमटी सिचुएशन गोटे देखिबो जे जदी दीटा माउंटेन मझरे वैली क्रिएट हिची गोटे से वैली रे will have stunted growth of trees. छोटिया छोटिया ट्रीज बनथियो एमती ह्यूज लंबा वाला ट्री बनियोनी ये रो एवरग्रीन ट्री जेमती बहुत लंबा लंबा थाए
50-60 मीटर्स थाए सेमिति बननी आमको एमती ही देखा तापर कौन ना यही स्लोप गुराक वी विल सी ग्रासलैंड्स ठीक अछि दिस इज द शोला फॉरेस्ट और रादर शोला ग्रासलैंड्स ठीक अछि तो यही सिस्टम टा ही दिस माउंटेन फॉरेस्ट वुड बी द बेटर आंसर बिकॉज हमें देखुचे ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी रहला सेमी एवरग्रीन भी रहला शोला ग्रासलैंड्स भी रहला तो एवरीथिंग वी फाइंड इन द वेस्टर्न घाट्स द क्वेश्चन रे the more appropriate and the more correct answer will be the tropical sorry mountain forests ठीक अछि so our answer here should be option B भूल करनो के तमनकर कोन कहबा रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग ता ठीक थिला जे वेस्टर्न घाट्स रहला एठी हेगी अरेबियन सी ब्रांच रे बहुत वर्षा होजी so it should have more amount of tropical evergreen forest tropical evergreen forest ro location टा एठी अधिक अछि but it would be more appropriate to choose option B ठीक अछि all clear with this okay chat रे समस्त चुप हे गेले भूल हे गेला बोल ना कोन सर predominant कोटा predominantly see ever the type of forest we find in mountain regions is called as mountain forest हमरो इंडिया रे भी से क्लासिफिकेशन टा अछि तो एटा पई हमरो कोन माउंटेन फॉरेस्ट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट तो एबे एक्सप्लेन कर लिया आ पुनी कोन पचार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन how many of the following rivers have their origin in the central highlands की हेबे लुनी माही केन बेतवा वेनगंगा सेंट्रल हाईलैंड रीजन टा कोन थिला हमें लास्ट क्लास रे डिस्कस करचे तो मु ता भितर को बेसी डिटेल रे जिबिनी जो मानकर मने नाही लास्ट क्लास प्रस्तुतिर लास्ट ज्योग्राफी क्लास रे जांकी देखि दबो ऑप्शन 4 none else और कलर दी जण न्यू कमर आसना दिया जी plateau north south very good समेत माने रखिछ ताले so everyone is saying answer is option C yes it is except luni river जोटा कि हमर origin कोठू आरावली see आरावली मु कोन कहली it is the margin it is not part of the central highland it is the margin of central highlands आरावली रो कोन पुष्कर वैली रीजन रु ओरिजिनेट हेची एंड ए लुनी रिवर टा सबुटु फेमस कोन पई ना बिकॉज ऑफ इट्स इनलैंड ड्रेनेज ठीक अछि इनलैंड ड्रेनेज पई एटा बहुत फेमस देन वी हैव माही रिवर जोटा कि हमरो विंध्याज रु बाहर छी विंध्याज रु बाहर की अरेबियन सी को पड़ी छी right then we have Ken and Betwa both are tributaries of which river Ken Betwa को river रा tributary के कहबो को
अरे केन बेतवा कहार ट्रिब्यूटरी ओ रिवर ट्रिब्यूटरी ओके तमने को से भीतर मु वेन गंगा कह दोची वेन गंगा along with it mixes with वर्धा रिवर रु बनुची हमर वर्धा आउ वेन गंगा मिसिकी बनुची प्राणहिता रिवर ओके द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ which river largest tributary of okay very good so this is the largest tributary of कौन सेटा को हमर गोदावरी okay and एटा होची both are tributaries of Yamuna केन एंड बेतवा दीटा का एमपी रे ही बाहरंती गोटे केन बाहरे कैमूर रीजन रु एंड बेतवा बाहरे फ्रॉम नियर भोपाल वेनगंगा महादेव हिल्स रु बाहरे ठीक अछि all of these महादेव हिल्स विंध्यास सेगुरा हमें देखतेले these are part of the or rather the southern edge of the central plateaus ठीक अछि then next question को जीवा चलो the structure of earth can be broadly classified into crust mantle and core this context consider the following statements the inner core is the densest part of all the layers of the earth the mantle comprises more than 2/3 of the earth's volume the crust is made up of primarily iron and nickel metals okay one is going with E who are correct okay let's see the inner core is the okay before we go into this okay general discussion कर दो तो हमारा कौन रहेला अर्थ the interior of the earth right earth रा interior different section रे divide ହେଇची right inner core ठीक अछि then मोर each layer मझिरे we see a discontinuity तो टोटल रे हमें पांचटा डिसकंटिन्यूटी देखिया को पाउचे फर्स्ट होची Conrad then we have Moho Betty Lehman sorry Gutenberg Lehman
lemon. ठीक अछि नाउ जो हमर इनर क्रस्ट आउटर क्रस्ट एगोरा सब रहिला एगोरागर कैरेक्टरिस्टिक्स कोन कोन ना आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट बिफोर वी गो इनटू दैट गोटे अछि हमर आस्थेनोस्फियर बोली एटा कोठी रहबो की कहि परिबो द आस्थेनोस्फियर कॉनराड मोरोविच तमे तमरो गुटेनबर्ग और रेपेटी रो ऑर्डर टा चेंज ही ठीक अछि आस्थेनोस्फियर टा कोठी रहबो upper mantle very good so somewhere in the upper part of the upper mantle we have the asthenosphere तो से पर्यंत जोड़ा रहिला पार्ट रहिला आउटर टोटल ऑफ क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल सेटा को हम कोन कहउछे लिथोस्फियर ठीक अछि लिथोस्फियर then we have asthenosphere then we have mesosphere I think then barysphere mesosphere is here asthenosphere here is barysphere ठीक अछि so this the another way of classifying the sections now crust kon rahila crust hochi the outermost the most like outermost layer of the earth तार दीटा सेक्शन अछि दीटा सेक्शन कोन कोन एटा तो हमें देखले इनर क्रस्ट आउटर क्रस्ट ता से तो गोटे ये रे डिवाइड करियो हमरो के हां ओशियनिक क्रस्ट आउट होची कॉन्टिनेंटल क्रस्ट राइट ओशियनिक क्रस्ट सेटा को हमें कोन कहूचे हां because it has silicon and magnesium in higher amount ଆଉ हमरो continental crust को कहूचे सियाल because it has silicon and aluminum the higher amount ठीक अछि the entire lithosphere is broken into different plates जोटा में plate tectonic under रे पढुचे and it floats on over the which asthenosphere semi solid asthenosphere or plastic medium कहते एटा को on the top of the asthenosphere जो थरे हमें देखुचे कोन ना convection cells magma convection cells एमती convective cells हमें देखिया को पाउचे राइट हमर क्वेश्चन गुडी जिबा कोन क्वेश्चन रे पचारतला देखि दवा ठीक है तो the first statement is कोन ना inner core is the densest part of the all the layers of the earth yes it is true inner core टा सबुटो dense रहबो because तादरे माने कोन हमर कोन कोंती बहुत ही अधिक हाई प्रेशर जोगु प्लस हमर जो अर्थ रा सेग्रीगेशन हितला से पॉइंट रे सबुतक डेंस मेटल थ्रू को टुवर्ड्स द सेंटर जाइतले एंड कोर रो गोल्ड प्लैटिनम यूरेनियम बहुत सारा हेवी मेटल्स हमें सेठी देखिया को पाउचे ठीक अछि तो कोर इनर कोर इज द डेंसेस्ट पार्ट ठीक अछि mantle comprises more than 2/3 of the earth's volume this is also correct it out a fact मन रखिया को पड़ो तुमको crust होची less than 1% mantle होची nearly 67% and हमारा core होची केते हला 30% पाखाबाकी ठीक अछि and the last statement एटा जो को आउची iron and nickel
एटा हम देखले क्रस्ट टा कोथरे मेड हेची और रहला सियाल एंड सीमा राइट ए दुटा को ही क्रस्ट so this is incorrect so our answer is option B ठीक है जी चलो आगे करो next question consider the following Tata Iron and Steel Company जमशेदपुर रे अछि Indian Iron and Steel Company हीरापुर रे अछि विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील वर्क्स दुर्ग रे लाई स्टील प्लांट शिवमोगा रे कोडा कोडा ठीक हबो को पेयर टा करेक्टली मैच हिज B 1 2 2 A and iron and steel industry हमर कोन कहला how many pairs are correctly matched ठीक अछि तो टाटा जमशेदपुर is correct iron Indian Iron and Steel Company हीरापुर देखो एठी this also is correct ठीक अछि तमे किस्ता जगह रे जदी सर्च करिवो त माने कहबे this is ए जो हीरापुर वाला क्वेश्चन मैच टा सेटा भूल अछि बोली काहे की ना देखो आगुरु बर्नपुर से सॉरी हमरो हीरापुर इज द ओल्डर यूनिट ठीक अछि द न्यूयर यूनिट इज एसोसिएटेड विथ बर्नपुर तो सेथि पई एटा को किछटा जगह रे तमे भूल भी पाइबो ओके ए के विदाउट एनी डाउट ठीक अछि दुई दुई आल्सो यू कैन मार्क इट एज करेक्ट हीरापुर ये रहइबो ठीक अछि प्रेजेंट हीरापुर नाउ बर्नपुर एग्जैक्टली देखो हीरापुर नाउ बर्नपुर नुह से बर्नपुर टा एक्चुअली गोटे डेवलप हैला एज अ इंडस्ट्रियल सेटलमेंट नियर हीरापुर ठीक अछि त हीरापुर जो लोकेशन टा रहला ता पाखरे गोटे जो मान सब से स्टील प्लांट रे इस्कोर स्टील प्लांट रे काम कले सेमानन पई किछि गोटे हाउसिंग यूनिट बसायक पड़िबो राइट तो तांको पई जो रेसिडेंशियल एरिया टा बनला दैट इज द बर्नपुर एरिया ठीक अछि एंड एबे कोन हेची हीरापुर रे जो यूनिट टा थिला जो प्लांट थिला हमरो इस्कोर दैट इज बीइंग शिफ्टेड दैट हैज बीन शिफ्टेड टू बर्नपुर ठीक अछि तो ठीक अछि एटा किछि भूल नै दिस आल्सो विल बी करेक्ट मु त मानन कहबिन जे एटा भूल मार्क करो बट कीप इन माइंड किछिटा जगह रे सेमती तम मानन को मिलिबो जे हीरापुर बर्नपुर ए दिटा भितरे कंफ्यूजन हेई पारे ठीक अछि then Visvesvaraya Iron and Steel Works this is in Shivmoga and Vilai Steel Plant is in Durg okay Durg district ro Vilai plant okay so our answer here will be option B chalo next question को जिबा को the peninsular region mostly consists of relict and residual mountains the river valleys in the peninsula block are shallow with low gradient the Sahyadri range forms the sharp edge of peninsular plateau so ए तीनटा भितरु केतरा स्टेटमेंट ठीक अछि को
ओके देखिए peninsular region mostly consists of relict and residual mountains. Yes, that is the fact. ଆମର eastern Ghats ho, western Ghats ho, Aravallis ho, these are all old mountains. The peninsular block is a very old landmass जोथि कि सेठी थिबा obviously landmass जते पुराना हबो सेते पुराना mountain system भी हमें पाइबा सेठी. So statement 1 is correct. River valleys in the peninsular block are shallow with low gradient. एटा होची गोटे confusing statement. तमर जदी एठी लिखि थांदा दीटा ऑप्शन ओके दीटा वर्ड ऊपर डिपेंड करथांदा हमें पूरा गारंटर सहित कहि परथांदे कोन ना गोटे होची generally और all ए दीटा को जदी वर्ड यूज हे थांदा generally लिखा हेतले करेक्ट हे थांदा all लिखा हेतले रॉन्ग हे थांदा काहे कि ना सेकंड पार्ट जोटा हमरो ग्रेडिएंट लो अछि दैट इज करेक्ट दे हैव अ लो ग्रेडिएंट कारण पेनिनसुलर ब्लॉक रो सेते हाइट अधिक नै ऑल ऑफ दिस एज वी नो आर रिलिक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन्स तांगरा हाइट कम देन शैलो पार्ट रे कोन होबो ना शैलो पार्ट रे भूली जो नर्मदा ताप्ती दामोदर महानदी all of these have what they flow through rift valleys and rift valley रे जो flow करचंदी तांकर depth is high they are forming gorges so they are not shallow ठीक अछि तो ए स्टेटमेंट टा टिके कंफ्यूजिंग रहइबो एटा को हमें साइड रे रख दवा हला हमकु बस जानियार अछि केमिति कोन आंसर करियार अछि एठी आंसर ठीक हो भूल हो चलिबो किछ न आंसर ले भी चलिबो then finally the Sahyadri range forms the sharp edge of the peninsular plateau. Sahyadri range koda it is part of the western Ghats near Maharashtra region right so एटा होची correct because western Ghats they form the edge of the peninsular plateau ठीक अछि again peninsular plateau रो मु एक्स्ट्रा किछि कहबिनी बस एतिकी जेतिकी रिक्वायरमेंट जे स्टेटमेंट बुझिया पे कारण लास्ट क्लास रे बहुत टाइम देकी मु कहिछि now next question consider the following statements the climate of this forest is mainly dry with occasional wet periods these areas receive less than 75 centimeter annual rainfall Kasoki grass grows abundantly in this type of forest which type of forest is described here wall form करे very good okay orni अब बढ़िया कल तो so option C is the correct answer लिख दवा दीजिए so here we have the tropical thorn forest यार कोन तमे डिफरेंट जगह रे डिफरेंट इंफॉर्मेशन पाइबो किछटार लिखा हितबो लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल किछि जगह रे 70 सेंटीमीटर लिखा हितबो किछि जगह रे इवन 50 सेंटीमीटर लिखा हितबो all of these will be correct तमे 75 धर की चलो 75 तळु को बाकी सब तो आसीबो ही आसीबो ठीक अछि देन एडा कोन ना को टाइप रो एठी हमें वेजिटेशन पाउचे जो मानकर जीरोफाइटिक adaptation ही जाइछि राइट जीरोफाइटिक adaptation ही छि एग्जांपल बबूल
hair, date palm, cactuses, right? And then गोटे very important जिनस हमको मिले जोटा कि होची कस्तोकी ग्रास एटा कोन ना एमती सब जो पैच रे ग्रास गोरा कही था ना एमती की एमती की पैच रे ग्रास बनथियो and your height is up to 2 meter height 3 मीटर पर्यंत उठी परियो माने द कोन कहबी कस्तोकी ग्रास कैन ग्रो this much मोर ऊपर को हां एती खंड पड़ जिवो राइट so that is the Tasoki grass जोटा कि मिले हमरो रीजन रे थॉर्नी फॉरेस्ट रीजन तो आंसर इज ऑप्शन सी चलो आगु जिबा which of the following observations was crucial in supporting the sea floor spreading hypothesis okay sea floor spreading theory विषय रे पचारची the rocks of the oceanic crust are significantly older than continental rocks first statement gala second rocks equidistant from the mid-oceanic ridges show similarity in the magnetic properties and chemical composition. Then sediments on the ocean floor are thicker than expected. Go. Answer कौन? Okay, comment. Yes, well done, Amit, Shakant. Okay, so the answer will be option B. Okay, first statement देखिए कौन? The rocks of the oceanic crust are significantly older than continental crust. एटा तो हमरो भूल कोची उल्टा कहलानी कि continental crust is older sea floor spreading theory कौन कहला ना हमरो sea floor spreading के theory किए देथिले कि रे कि कहि परिबो जति भीतर बनौची एटा ती भीतर को theory टा किए देथिले Harry Hess very good Somit so this was given by Harry Hess ठीक अछि this is the जो also trust now
हमर कोन कहितले जो हैरी हेस देथिले ए थ्योरीटा ठीक अछि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वाज गिवन बाय सर हैरी हेस गोटे इंटरेस्टिंग जिंस होची कि ए जो थ्योरीटा आस्थिला एटा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 असला 1960s ऑब्वियसली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 2 रे बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हेतला जेमति कि हमर गोटे बनथला सोनार राइट तो ता सहित सबमरीन वगैरह रो भी डेवलपमेंट स्टार्ट हेतला तो ए सब जिंस को यूज करिकी किछि जण मिस्टर हैरी हेस ही वाज एक्चुअली एन आर्मी ऑफिसर आल्सो ठीक अछि यूएस मिलिटरी रो जण मेंबर थिले सी तो ये सोनार टेक्नोलॉजी यूज करिकी देखिया चाहिए जे जो ओशन फ्लोर रहिला ता भितर सब कोन कोन रहउची एठो एमती हमर लैंड असला एमती एटा होची हमर कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह सब रहिला तापरे हमर गायोट्स सी माउंट्स सी वोल्केनोस abyssal प्लेन एमती सब रहिथिबो जो जिंस होराका सेउरा से सब चेक करके देखले जे कोन कोन अछि राइट तो सेही चेक कला भितरे से किछटा ऑब्जर्वेशन करथिले कोन कोन से ऑब्जर्वेशन थिला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थिला जे ओशनिक क्रस्ट जो हमर रहिला एटा होची कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रु बहुत ही पुराना नुआ रहउची द एज ऑफ ओशनिक क्रस्ट was very less when compared to the age of continental crust continental crust 200-300 वर्ष ऊपर पर्यंत मिलियन 200-300 मिलियन वर्ष पुराना रॉक पाउचे इवन हमें बिलियंस ऑफ इयर्स पुराना रॉक भी पाउचे ओशनिक क्रस्ट रे 200 रो ऊपर को कोठी किछि मिलिन ओके एटा से गोट देखले ता सहित कोन देखले ना से आउट जिंस ऑब्जर्व कले जे ओशन रो सी अटलांटिक ओशन देखिथिले ता परे ऑब्जर्व कराला अदर ओशन से कोन देखाला ना एवरी ओशन हैज अ मिड ओशनिक रिज लंबी थिवो जोटु की मैग्मा बाहरची एंड ए जो थ्योरी से बनिथिले तार बेसिस से नेथिले जो कन्वेक्शनल मैग्मा रोची तार थ्योरीटा ठीक अछि द कन्वेक्शनल सेल थ्योरी ऑफ मैग्मा सेटारो बेसिस नै कि सेटा को बनिथिले कोन कहले ना मैग्मा रो राइजिंग लिम्ब जोठी रहउची सेही पॉइंट रे द ओशनिक क्रस्ट इज स्प्रेडिंग अपार्ट तो एमती ऊपर को आछी मैग्मा एमती तापरे पुश करके अलगा कर दोची सेही पॉइंट रे मैग्मा राइज होची व्हिच इज गिविंग राइज टू द मिड ओशनिक रिज और रादर सी कहतले मिड अटलांटिक रिज देन एठु जो क्रिएट होची दिस इज गेटिंग क्रिएटेड एट द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस एंड एडा आसी की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पाखरे डिस्ट्रॉय होची ठीक अछि से ती कहतले देन ए जो ओशनिक क्रस्ट रहिला एटारे कोन होची से आउट जिंस देखले जे each side of the mid oceanic ridge एमती alternating strips रे magnetic characteristics शो करछन तो साउथ 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 फेसिंग तापरे जाउची एमती एबेला अल्टरनेटिंग थिला नॉर्थ साउथ हेकी एमती जाईची ता सहित कोन देखिले ना सेम जो नॉर्थ साउथ एटा S1 N1 S2 N2 सेमती ना देथिले बुझा आइसी हो तो बोथ द S1s had similar properties similar age सब किछि सिमिलर थिला कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री होची बट दैट टर्म केम लेटर ठीक अछि सेडा एबे आसनथला देन N1 रो सिमिलर प्रॉपर्टीज रोची केमिकल कंपोजिशन हो एज हो सब किछि सेम रोची सिमिलरली S2 N2 सब रो सेम रहल तो एई सब जिंस ऑब्जर्व करके से निजर थ्योरीटा देथिले ठीक अछि दीज वर द ऑब्जर्वेशंस व्हिच वी यूज एज प्रूफ तांको थ्योरी कोन थ्योरी एया तांकर जे मैग्मा रा कन्वेक्शन सेल जोगु ओशनिक क्रस्ट स्प्रेड आउट होची नुआ क्रस्ट बनुची एंड सेही नुआ क्रस्ट ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन पाखरे डिस्ट्रॉय होची ठीक अछि सेटा थला तांको थ्योरी तारो प्रूफ गोरा सब होची ए गोरा ठीक अछि हां क्वेश्चन को वापस जीवा
So statement 1, rock are significantly older. No, they are younger. So 1 is incorrect. So हमरा A आउ C कटिगला 2 आउ 3 भितरु जोटा ठीक हो सेटा आंसर हो. Rocks equidistant from oceanic ridge show similar magnetic and chemical composition. ठीक अछि एटा हम एबे डिस्कस करले. So option B is the correct answer. Sediments, yes, sediment कथा मु कहि नथली ने. Sediment रो कोन होची ना एमती आमे जदी दूर जेते दूर को बढ़ी की जाउचे तेते अधिक सेडिमेंट मिलुचे. तो सेडिमेंट रो थिकनेस टा एमती कमी कमी जाउचे बिकॉज एई पट साइड रे ओल्डेस्ट रहइबो तापरे धीरे 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 यंगर ही जीवो. तो नुआ क्रस्ट जोठी बनुची ता ऊपर कम सेडिमेंट जमा हेथिबो. सिमिलरली ऑन दिस साइड एज वेल. तो सेडिमेंट रो थिकनेस टा एमती increases from the mid oceanic ridge towards the continental margin. ठीक अछि. चलो तापर नेक्स्ट को जीवा. गला नेक्स्ट क्वेश्चन. With respect to the Indian states Gujarat, MP, Karnataka and Telangana respectively, the largest producers of soybean, groundnut, maize and rice. तो एई चारटा करे कोउडा रे को स्टेट रे अधिक प्रोड्यूस हुए सेइडा तम मानू लिखियार अछि. गुजरात रे सोयाबीन अधिक हुए कि ग्राउंडनट अधिक हुए. देन एमपी रे ग्राउंडनट, सोयाबीन, राइस, मेज एमती तुमको ऑप्शन टा चूज करियार अछि कोउडा रेस्पेक्टिवली कोथरे रहउछ. ठीक अछि को ओ जल्दी ए बी अछि. करेक्ट आंसर the correct answer is option B. Okay, तो चलो आगु जीवा. तादरे बेसी किछि वो डिस्कस करिया नहीं है. चलो consider the following statements. Statement 1 कौन कहूची. The northern slope of Himalayas have thicker vegetation cover than the southern slopes. Statement 2 कहूची. The northern facing slopes have relatively lower precipitation than the southern slopes of the Himalayas. Statement 1, 2 both correct. 2 is explaining 1. Both correct, not explaining. Statement 1 correct, 2 incorrect, 1 incorrect, 2 correct. So choose the correct option here. अमित थरे प्रेस कले एमदी तो देखिए कौन अच्छी vegetation. The northern slopes of Himalayas have a thicker vegetation cover than the southern slopes. This is incorrect. The southern slopes have a thicker vegetation cover than northern slopes. कहीं ना southern slope रे ही हमारा monsoon wind आसी की rainfall करे, right? Rainfall करे एमदी. तो rainfall जोठी अधिक हबो ता सहित कोन हबो ना. This is towards the north of the Tropic of Cancer. तो याद रे एई साइड रे ही हमरो सनलाइट अधिक पड़िबो. तो बोथ सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन दीटा को जेतु अधिक अछि हमें सदर्न स्लोप रे बेसी देखिबा वेजिटेशन. ठीक अछि. एंड स्टेटमेंट 2 this is correct but it is not the statement 1 is incorrect. So our option is answer is option D. ठीक अछि. चलो आगु जीवा. Next question. A person planned his journey between the months of June and September. He had planned to visit the following cities. Arrange the following cities
in the order of decreasing rainfall received during the entire travel plan period. गोटे रहा रायपुर, जयपुर, पणजी, लखनऊ. कुह decreasing order of rainfall. एटा होची टिपिकल यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन. देखिए ओल्ड पैटर्न यूपीएससी क्वेश्चन बट स्टिल. रेन बियरिंग जोन. चलो कुह कौन कहा को आंसर आसनी एटार गोटे गेस मारो. ए ए ए ए ए ओके. सागर कुमार दे. सागर आई थिंक यू आर आंसरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. पर्यंत आसी नथला एबे जॉइन कला बोधे. सो वेलकम. ओके सो आंसर्स हैव गिवन ए. बाकी बाकी समस्त कुआडे गला. एते जण अछ मात्र 3 जण आंसर कोन दोछ. ओके चलो देखिए फर्स्ट कौन ना को पीरियड दीची बिटवीन द मंथ्स ऑफ जून एंड सेप्टेम्बर. एटा को सीजन हमर एटा होची रेनी सीजन जोटा को हमें आल्सो कोन कहूचे साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन. राइट. साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन रे रेनफॉल हमर कोटी कोटी अधिक हुए सेटा हमें टिके आगे देखिया. और रादर साउथ वेस्ट मॉनसून रे रेनफॉल पैटर्न टा हमर इंडिया रे केमिति रहउची. तो चलो राइट रहला कोन घाट्स. देयर वी हैव घाट्स. क्या होची हमरो अरावली गला. देन वी हैव द हिमालयन. एठी हमरो गारो खासी जयंतिया हिल्स. ठीक अछि. तो एई भलिया रहइबो माउंटेन रो डिस्ट्रीब्यूशन टा. कोन रफ ए तापरे साउथ वेस्ट मॉनसून को डायरेक्शन नु आसीबो ए डायरेक्शन नु आसीबो. राइट. द साउथ वेस्ट मॉनसून
चलो this is the Arabian Sea branch, and this is the Bay of Bengal branch. अरे बे, अरे बे ऑफ बंगाल कैसे मोमो दीदी, राइट? दिस विल बी बे ऑफ बंगाल, ओके, ये वाई बे ऑफ बंगाल. चलो नेक्स्ट. फर्स्ट लाइव क्लास, ओके सागर, वेलकम. चलो, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच वाला. अरेबियन सी ब्रांच कोठी हेवी रेनफॉल करेबो हमरो वेस्टर्न घाट्स रे वेरी हेवी रेनफॉल, राइट? बे ऑफ बंगाल ब्रांच कौन करिवो, इट विल cause rainfall in the eastern ghats region, specifically odisha and andhra region. तापरे हमरो वेस्ट बंगाल रीजन रे भी करिवो, बट हाईएस्ट रेनफॉल कोठी हबो इन दिस रीजन, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? नाउ हमकु कोन कोन टाउन रो ना दितला, रायपुर, जयपुर, पणजी, लखनऊ. सो towns are रायपुर, जयपुर, लखनऊ. ठीक अछि, दैट आउट जिंस एठी कोन हबो, एठी हमरो नियर द अरावलीज देयर विल बी नेक्स्ट टू जीरो रेनफॉल. ठीक अछि. नाउ एबे जिबा हमरो को टाउन टा कोठी अछि. तो जयपुर is here in the Maharashtra region, Jaipur. Then Panaji is located here in Goa. Then we have Lucknow in UP, Lucknow. Then Raipur. Okay. तो एबे लोकेशन देखिए मते कुह कोठी वर्षा हबो केते हबो. Before anyone else बे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बे, ये थिले परा हमरो मोमो दीदी, तांको एबे ब्रेकअप हे गला वेस्ट बंगाल से. तो शशिकांत राजस्थान, कौन राजस्थान शशिकांत? समस्ते कौन आंसर दिथलो या अथॉरिटी. चलो देखिबा एटी कोन होची जयपुर रे इट इज वेरी लो. पणाजी रे कोन होची, हियर वी विल सी वेरी हाई, राइट? देन रायपुर रीजन जेतु इट इज क्लोजर टू द कोस्ट, it will have moderate rainfall or even you can say moderate to high rainfall. लखनऊ टा टिके भितरुआ हे जाउची, सेति पय टिके तो लो टू मॉडरेट रहबो. लो मान तो भाबन जे देखो दिस इज अ स्पेक्ट्रम हिसाब रे देखो, एटा होची जदी हमर जयपुर रीजन रहला एंड एटा होची रायपुर रहला, सॉरी पणजी रहला, रायपुर टा एट रहबो एंड लखनऊ टा समवेयर हियर. ओके, तो सेही भलिया गोटे स्पेक्ट्रम रे तमे इमेजिन करतियो. ठीक अछि. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. तो हमारा आंसर कौन होबो, डिक्रीजिंग, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेनफॉल. डिक्रीजिंग हेले सबुठु अधिक तीनी तीनी, सो आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक अछि. चलो समस्त ठीक आंसर दिथलो. नेक्स्ट क्वेश्चन,
consider the following statements about soil erosion. कौन ना rill erosion is the uniform removal of a thin soil layer over a large area due to rainfall. Then next statement, the biggest hotspot for soil erosion in the country is the Brahmaputra Valley in Assam. So answer को को स्लो को बा Pranati option Shikant is B. Anyone else? Okay नहीं सागर सी आशीष ए ओके समस्त चार जन चारटा आंसर कहि देलानी ओके लेट्स सी real erosion is the uniform removal of thin layer of soil. So this is first statement is incorrect. कौन हमर soil erosion रे first आसे कोट होची flash erosion. Flash erosion ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ sheet erosion. sheet ପରେ ଦେଖୁଛେ hill erosion. Then gully. ठीक अछि तो ए जो चारटा का टाइप चारटा का इरोजन रहिला these are different stages. Flash erosion को हबो ना तमरो एटा लैंड अछि तापरे सॉइल रहिला तो सॉइल अछि तो सॉइल रो पार्टिकल किछटा लूज पार्टिकल भी थिबे तो जेतबेले वर्षा होची कि पानी पडुची आसी कि तो इट विल कम एंड स्ट्राइक हियर एमती माडा हबो पानीटा आसी कि पडिवो एमती तो से कोन हबो ना सॉइल रो किछि पार्टिकल को सेठू उड़ेई कि रिमूव कर दबो और मोर लूज कर दबो व्हिच विल रिजल्ट इन enhancement of the erosion process. Then sheet erosion को हबो ना sheet erosion रे एटा तमरो लैंड रहला लैंड ऊपर गोटे थिन लेयर ऑफ वाटर बसी जाई ठीक अछि तो सेहिथि पई कोन हेछि ना सॉइल रो जस्ट ऊपर एठु गोटे पतला लेयर कोन हबो ना जेतबेले हमर ए वाटर टा ड्रेन हबो ना तो से पतला लेयर टा with that water will get removed तो बहुत ही thin layer हबो but it will be removed तो सेडा होची sheet erosion गोटे extensive region रे गोटे पतला layer टे remove हो गोटे layer skin जो तमर जेमति remove करिवो सेमति skin भलिया remove होबा sheet erosion रे then real erosion रे कोन हबो real erosion रे हबो एटा एमति रहला land तो ता देरे एमति line formation हे की erosion हबो छोटो छोटो डेप्थ रो माने ए डेप्थ रो गोटे लाइन बनिवो द लैंड तादरे एमती छोटो छोटो डेप्थ रो लाइन बनी की इरोजन टा हो ठीक अछि नाउ जेतबेले से लाइन टा डीप हे की आउरी बडो हे जिवो सेटा को हमें कोन कहबा सेटा को कहबा गली इरोजन की बडो बडो हे जिवो सेटा होची गली इरोजन एंड दिस फॉर्मेशन जोटा गली रु आहुरी अधिक एटा हैला गली फॉर्म हैला ठीक अछि गली इरोड हे कि आहुरी बड बड ये कि फॉर्म हबो माने बैडलैंड टोपोग्राफी हमें पाउचे जोटा सेटा कोचे बाय द फॉर्मेशन ऑफ रेवाइन्स ठीक अछि सागर तमे कोन कमेंट करी कि दीटा डिलीट करछो इट्स ओके तमे भूल आंसर देले डोंट बी एम्बैरेस्ड अबाउट एनीथिंग भूल आंसर दे कि ही तमे एग्जाम रे ठीक करिवो ठीक अछि so statement 1 here is incorrect okay
Then the biggest hotspot for soil erosion in the country is the Brahmaputra Valley in Assam. So this is actually correct. कहेंगी ना हमें एबे ही देखिले ये रे देखो this is the Brahmaputra Valley region এই region টা ओके एठी कौन होची very heavy rainfall मु कहली right highest amount of rainfall हमें एठी देखिया पाउछ सेटा कोन पई ना because of the conical shape of the Himalayas funneling effect हे जाय and बहुत सारा heavy rainfall हे जाय से एरिया रे बहुत सारा मॉइस्चर सेठी की गोटे पॉइंट रे कंसंट्रेट हे जानती एंड हेवी रेनफॉल करंती जोथि बैंक हमें एवरी ईयर फ्लडिंग देखुचे इन द ब्रह्मपुत्र रिवर ठीक अछि तो सेहिति पई से रीजन टा गोटे हॉटस्पॉट अछि हमर सॉइल इरोजन रे इन इंडिया ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट okay since 1981 the growth rate of Indian population has started slowing down gradually due to which of the following reasons reduction in birth rate increase in the mean age of marriage improved quality of life so answer को कौन हबो this is actually a nice question जब तुम NCERT पढ़िचो diligently then you will be able to answer this question without any problem समेत कमेंट कर दी जन चार दु छह जन ए ए ए सर वेयर डू यू सी द नॉर्थ ईस्ट या को साउथ ईस्ट करे बहुत सिमिलर एनिमल साउथ ईस्ट एठी हमर कोन रहला हिमालयस पूर्वांचल हिमालयस गला ता तळकु आसी हमर कोन ना ए पटे एमती आसी द म्यांमार रीजन अराक्कन न्यूमा ई साइड रे भी अछि सेटा अराक्कन न्यूमा को आउची तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस जोठी के हमर मर्ज हिची राइट ए रीजन टा जो रहला हमर साउथ ईस्ट एशिया रहला ई जगह रे रहबो साउथ ईस्ट एशिया रे भी तमे से म्यांमार की वियतनाम ए रीजन रे ही देखिया होबो जोडा क्लोजर टू इंडिया सेठी बेसी मैच करिवो ए रीजन रे चाइना रा पार्ट रे रहला तिब्बत रो किछि पार्ट रे रहला वी विल सी सिमिलर एनिमल्स काहे की ना सेठी हमें सिमिलर टाइप रो क्लाइमेट देखिया होबो क्लाइमेटिक कंडीशंस हेवी रेनफॉल हेवीली फॉरेस्टेड एरिया हाई एल्टीट्यूड रीजन्स तो सेठी पई हमें देखुचे ठीक अछि क्लाइमेट ही डिटरमाइन करिवो जे को टाइप रो बायोटा हमें पाया बायोटा मीनिंग एनिमल्स और फॉरेस्ट ठीक अछि हिमालयन यस ओके एवरीवन इज गोइंग विथ ऑप्शन ए चलो क्वेश्चन डिस्कशन करिया एबे हां क्वेश्चन हमर कोन थला ओके पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऊपर डी डिस्कस करिया कोन करिया हां पॉपुलेशन विषय रे जतले हमें पढुची ह्यूमन ज्योग्राफी रो गोटे होची हमें पाउचे कोन ना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देन पॉपुलेशन रे पढुचे देन पॉपुलेशन
growth, composition. Population distribution माने कौन ना को एरिया रे केते लोक रहउछन. अर्बन एरिया रे अधिक लोक रहले, रूरल एरिया रे टिके कम रहले, प्लेन रीजन्स रे अधिक लोक रहले, माउंटेनस एंड फॉरेस्टेड रीजन रे टिके कम लोक रहले, राइट. तो सेटा होची पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. कोठी केते लोक रहउछन, जोठी अधिक रिसोर्सेस अवेलेबल होला सेठी लोक अधिक रहले, जोठी रिसोर्सेस कमी गला सेठी लोक कम रहले. तो डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस हमरो डिस्ट्रीब्यूशन टा डिफरेंट जगह रे डिफरेंट रहे. सो बेसिकली uneven distribution we see everywhere, but in case of India it is highly uneven. ठीक अछि. Then population density कौन ना total population living in the area divided by the area of the area or rather area of the location. So basically number of people per square kilometer is the population density. केते densely packed है कि अछि ए region रे. Let's see this is region A. तो एठी population टा एमती distribute है कि अछि, but this is region B. एठी population टा एमती है कि अछि, right. So this is the density distribution, right. चाइना रो खास करी यूनान प्रोविंस. Okay. Then next is the growth, population growth. Basically कौन ना change in population over a period of time. It is population growth or change, right. Now before we go into that हमें ग्रोथ ऊपर ही बेसी डिस्कस करिया बिकॉज़ ता ऊपर क्वेश्चन टा, बट ता आगु कंपोजिशन विषय रे देखे दो. कंपोजिशन रे कोन हम देखुचे ना composition of the population depends on various factors. कोन ना फर्स्ट होची कहला ना जेंडर. ओके, बेसी मेल की बेसी फीमेल तो से हिसाब रे कंपोजिशन टा डिफरेंट हो. ठीक अछि. तो एमिति भाबी दियो जे हमें बर्थ देखो एमिति गोटे स्टोरी रे भाबो जे तमे जन्म हेलो तो तम घरे आसिकी तम साई लोक पचारले अरे पुओटे हैला कि झियोटे हैला. तो फर्स्ट होची जेंडर, राइट. तापरे तमे धीरे 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 बड़ हेलो, स्कूल जीवा स्टार्ट करलो तो तमे सेतिकी बेलू घर बाहर की स्कूल गला बेलू तमरा पड़िसा घर आंटी पचारचंदी अरे बाबू तोर एज केते हैला. सो योर एज एज रे कोन हमें देखिबा एटारे मेल और फीमेल रहला. एबे गोटे थर्ड जेंडर भी आसीची. जेंडर केस रे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड थर्ड जेंडर. ओके. देन एज रे कोन ना चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड. तार भी बहुत सारा सब कैटेगरी करियो बट बेसिकली ये तीनटा कैटेगरी. तमे गोटे छुआ अछ टीनेजर तळुकु अछ 14 15 18 वर्ष तळुकु 18 रु 60 60 ऊपर कहला. देन एज गला तापरे तुमको कोन पचारिबे तमरो अरे तू 10th सरला परे कोन करिवु, साइंस नबु ना कॉमर्स नबु ना आर्ट्स नबु. आर्ट्स नउचु तू गध, साइंस नउचु बढ़िया पिला. एमती मेंटालिटी रहउछ लोकंकर. तो योर एजुकेशन एजुकेशन गला. एजुकेशन सरिया पर तो कोन पचारिबे अरे कोन काम कलुनी कि नहीं. तो यू विल बी आस्क्ड अबाउट योर ऑक्यूपेशन. एडा बड़ा भेंडा पिला हेलुनी ए पर्यंत बसी कोन पढुचु, चाकरी बाकरी करियार नहीं कि कोनती ना नहीं. तापरे नेक्स्ट ऑक्यूपेशन तमे कला परे अरे कोठी चाकरी करछु
आईबीएम रे टीसीएस रे सैलरी केते पाउछु राइट सो इनकम राइट तापर सब ठीक करी तमे तमरो लाइफ एंजॉय करथो चारियाडे बुलिवो अरे एलजीबीटी क्यूआईए प्लस 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 टोटल 70 प्लस जेंडर्स बाहर देन इनकम परे हमर कोन आसीबो तमरो सब जिंस ये करी मन रे बुलुथो सब करथो तोर के ये खुशी रे बुलुची हमको भल लागुनी बाहा एलुनी कि नहीं बाहा हो जल्दी राइट तो योर मैरिटल स्टेटस तो सेही लोकेशन रे जो पॉपुलेशन अछि तार एई सब कैरेक्टरिस्टिक को नै की ही हमें देखुचे जे तार कंपोजिशन टा केमिति रहउची ठीक अछि तो दिस इज अबाउट कंपोजिशन नाउ हमें जीवा ग्रोथ विषय डिस्कस करिया स्पेसिफिकली ओके नाउ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मु कोन कहली अनइवन रहउची सेटा कहा ऊपर डिपेंड करची इट डिपेंड्स ऑन physical factors and socio-economic factors. Physical factor रे कौन रहिबो different resources जेमति कि water availability, the terrain जदि mountainous region हितो सेठी रहिबा कष्ट हिजो राइट तो से जिंस रहिला ता से तो कोन हबो हां क्लाइमेट टा भी भलो हितवा दरकार तमे राजस्थान रीजन रे जाई कि रहिबा पसंद करिवो ना हमर ई कोस्टल रीजन पूरी रे रहिबा पसंद करिवो तो चैन से जीने नहीं देंगे समित आई डोंट नो तमरो काहे कि एटा होची बट किछिटा कमेंट तमरो खाली नो अलगा मानकर भी किछिटा कमेंट मन को ही ट्रांसलेट हो जाउची राइट सो यू हैव रिटन चेन से जीने नहीं देंगे हमरो स्मार्ट यूट्यूब रो एआई को करची यू विल नॉट लेट मी लिव इन चेन्स ओके बढ़िया ट्रांसलेशन यूट्यूब रो कोन कहबा ओके चलो these are the physical factors socio economic रे कोन level of urbanization level of industrialization agriculture status ए सब ऊपर डिपेंड करी कि हमरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टा अलग अलग जगह रे अलग अलग थाए राइट सेट पे हमें सेटा को हाईली आनी नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ और रादर हमें एटा को चेंज इन पॉपुलेशन कहले बेटर हबो ओके और ग्रोथ भी कहले पॉजिटिव नेगेटिव ग्रोथ अछि ठीक अछि छाड़ डिपेंड्स ऑन two different kinds of factors or it has two different components कौन कौन गोटे होची नेचुरल कंपोनेंट आउट होची इंड्यूस्ड कंपोनेंट नेचुरल रे दीटा रहउची कौन ना गोटे होची बर्थ जन्म हेले पॉपुलेशन बढ़िबो आउ कोन हबो डेथ मृत्यु हेले पॉपुलेशन कमिबो इंड्यूस्ड टाकू आल्सो हमें कहि परिया माइग्रेशन तो माइग्रेशन भी दी टाइप रो अछि लोक आसिले पॉपुलेशन बढ़िबो लोक छाड़ी की पळेले पॉपुलेशन कमिबो तो इनवर्ड माइग्रेशन और जोडा को कहंती इमिग्रेशन आउटवर्ड माइग्रेशन जोडा को आल्सो कहंती कोन इमिग्रेशन ठीक अछि so these are the factors on which the growth or the change in population depends ठीक अछि ता सहित किछिटा अदर फैक्टर अछि इंड्यूस्ड फैक्टर रे कोन ना अदर फैक्टर्स किछटा अछि कोन जेमति कि प्रूव्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रूव्ड लाइफस्टाइल
improved education, right? तो एमती बहुत सारा अदर फैक्टर्स भी अच्छी जोटा कि अफेक्ट करे हमरो पॉपुलेशन चेंज को, ठीक अछि। हां, एठी हमहु पचारछि कोन इंडिया रो पॉपुलेशन चेंज विषय रे, राइट? तो इंडिया रो जो पॉपुलेशन चेंज हला, इंडिया रो पॉपुलेशन ग्रोथ ता हमें चारटा फेज रे डिवाइड करछ, ठीक अछि। Is divided into 4 phases, 1 2 3, ठीक अछि। फेज 1 टा कोन 1901 रो 1921, फेज 2 1921 रो 1951, फेज 3 1951 रो 1, फेज 4 1981 रो till present, ठीक अछि। नाउ ये जो फर्स्ट फेज रहिला, इट इज नोन एज द पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन, ओके। ए पीरियड रे पॉपुलेशन ग्रोथ हे नथला, रादर इवन पॉपुलेशन रो नेगेटिव ग्रोथ हमें देखथिले इन द पीरियड ऑफ 1911 टू 21। अच्छा किए मते कहबो चैट रे जे फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया केबेटू स्टार्ट हितला, और रादर सेंसस केबेटू स्टार्ट हितला? एटा कोन पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन, देन नेक्स्ट आउची पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फाइनली प्रेजेंटली हमें कोन अच्छे स्लो डाउन ग्रोथ। ये फेज रे हमें देखुचे गोटे स्लो डाउन हिची ग्रोथ रे, बट इट इज स्टिल ग्रोइंग, ठीक अछि। 1981 रिपन, वेरी गुड। चलो नाउ नेगेटिव ग्रोथ देखथिले हमें 1911-21 रे, काहे की ना से पीरियड रे वर्ल्ड वॉर 1 हितला एंड सेथिरे बहुत सारा इंडियन मानन को फोर्स करा हितला टू फाइट, तो सेथिरे बहुत जनकर डेथ हितला। ता सहित सब जो मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस करी की ब्रिटिश माने इंडियन मानकर बहुत ही डेथ रेट बढ़ाई देथिले। ए पीरियड रो कैरेक्टरिस्टिक कोन थिला? इट हैड हाई fertility and high mortality, ठीक अछि। तो फर्टिलिटी माने कोन? बर्थ रेट, मोर्टालिटी माने होची डेथ रेट। तो ए पीरियड रे फेज 1 रे we see that high fertility and high mortality रहउची बोली किछि भी ग्रोथ होनतला, स्टैग्नेंट रहउतला। तो सेति पई दिस इज अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन, राइट? तो ये जो स्टैग्नेशन पीरियड रे कोन पई हाई डेथ रेट हमें देखिया पाउतले? बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। ब्रिटिश माने तो हेल्थ केयर पई किछि हेल्प करूनथले हमकु। एंड हाई बर्थ रेट कहीं होतला? बिकॉज ऑफ द हाई मोर्टालिटी। गोटे मेंटालिटी थिला जे अधिक छुआ जन्म कले अधिक छुआ बंची, ता भितरु एटलीस्ट 5टा जन्म कले एटलीस्ट 2टा बंची की रहिबे। तो सेही प्लान रे दैट वाज द रीजन फॉर हाई बर्थ रेट। ता सहित कोन इलिटरेसी थिला, बहुत कम एज रे बाहागर हो जाउतला। तो से सब जोगु हाई बर्थ रेट रहउतला, ठीक अछि। देन ए फेज रे कोन होबो ना, birth rate will remain high, but death rate टिके कमियो। माने एमती नुहे जे पूरा चेंज हे जो, डेथ रेट टा टिके कमियो, ओके।
तो कौन पई एटा हबो ना एई पीरियड रे we see overall improvement in the sanitation health care से सब रे हमें improvement देखियो पहले काहे कि ना around this point middle class intelligence जो हमर इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे राइज करथिले ए पॉइंट को सेमानकर नंबर ता बहुत अधिक हेतला त सेमाने ए सब प्रमोट करथिले गांधी जी भी निजर ये रे जे निजर एरिया को क्लीन रख ये करो से सब गांधी जी कर 10x भीतर थिला राइट तो से सब जिंस को फॉलो करिकी डेथ रेट टा लो हे सतला सैनिटेशन ये सब जो प्रॉपर ये वेज फॉलो करिके मोर्टालिटी टा कमी गला बट फर्टिलिटी अधिक रहिला राइट ता सहित ए पॉइंट को बेटर कम्युनिकेशन बेटर ट्रांसपोर्टेशन सब आसी जेतला रेलवेज वगैरह सब बहुत ही भलो से माने ऑब्वियसली नॉट लाइक प्रेजेंट बट से पीरियड हिसाब रे डेवलप हे सतला रोड ट्रांसपोर्ट से सब भी डेवलप हे जेतला तो सेति पई कोटे रीजन में जदी फैमाइन होतला से जाऊ खाइबा इजीली पहुंच जाउतला ठीक अछि देन नेक्स्ट हां द ईयर 1921 is considered as the year of great divide in the context of population growth of India right then काहे कि ना ए पॉइंट पर्यंत स्टैग्नेंट हे कि रहउतला तापर बढ़िया स्टार्ट हला इवन टिल फॉल भी करछि नेगेटिव ग्रोथ भी देखैछि ओके देन कोन हला नेक्स्ट होछि 1951 रु 81 देखो एठी कोन हेतला स्लो बर्थ रेट माने स्लो राइज हेतला पॉपुलेशन रे ठीक अछि सी हाई बर्थ रेट रो रीजन से हेतला चाइल्ड मैरिज नो से पॉइंट रे चाइल्ड मैरिज तो चलतला बट देयर वाज बैन ऑन चाइल्ड मैरिज तो सेति पई बेसिकली हमें एटा कहबा जे लो एज ऑफ मैरिज थला सेतबेले ठीक अछि देन 1951 रु 81 पर कोन हला गवर्नमेंट माने इंडिया इंडिपेंडेंट हे गला बट ए पॉइंट रे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हेछि काहे कि ना एक रे इलिटरेसी बहुत अधिक थला दुई रे बहुत ही सारा माइग्रेशन हेतला से पॉइंट रे जेतबेले पार्टीशन हला पाकिस्तान नु बहुत लोक आसले ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान नु बहुत लोक आसले तापर जेतबेले हमें बांग्लादेश को अलगा करै देले बांग्लादेश रु भी बहुत लोक आसले इवन ता पूर्व तिब्बत रु भी बहुत लोक आसले टू अवॉइड चाइनीज प्रोसिक्यूशन दलाई लामा का अंडर रे 1959 पीरियड रे राइट so all these resulted in the population explosion तो एठी कोन हितला ना चार जण हितले से चार जणकर फैमिली टा है कि बॉडी की हला 8 की 12 जणकर तो एमती एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हबा को लागिला and that is why this period is considered as the period of population explosion ठीक अछि then तापरे कोन हितला अगेन ए जो माइग्रेशन टा होतला कोन पई बिकॉज़ इंडिया हैड बेटर सिचुएशन कंपेयर्ड टू इट्स नेबर्स तो सेठू से माने पळे आस्तले भागी की अगर चाइल्ड मैरिज मेडिकल डिपार्टमेंट एते डेवलप हे नता सी इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेडिकल सेक्शन तादरे मल्टीपल जिंस हम कहली हेल्थ केयर सैनिटेशन तापरे हमरो कोन कहबा हाई बर्थ रेट सॉरी हाई बर्थ रेट रो रीजन ता पूछ these are the reasons for low death rate okay this is not associated with birth rate रो रीजन अलगा थिला ठीक अछि now death rate again एठी बहुत ही कम नथिला कम थिला बट बहुत कम थिला very sharp fall देखिबा हमें here in this case death rate बहुत ही कम जिवो very less birth rate भी टिके कमी जाइछि and as a result हमें growth रे slow down देखिया को पाउचे and this slow down कोन हिची ना result of what जो birth rate low हैला कोन पई हैला ना एक रे एजुकेशन लेवल बढ़ला लिटरेसी बढ़िया सहित इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हैला इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ला ता सहित मैरिज एज रे इंक्रीज हेची देन तापर हमर कोन रहला ना मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह बढ़िला से सब रीजन जोगु हमें देखिया पाइले जे
एटी बर्थ रेट भी टिके कमी एंड फैमिली प्लानिंग विषय लोक मान जना पड़ला राइट तो एबे आंसर तो reduction in birth rate, increase in mean age of marriage, improved quality of life. Answer will be all of the above. Option D. Okay. चलो next question को जीवा. With respect to distribution of minerals in India, consider the following statements. कौन? Now, the southwestern plateau region have diversified mineral deposits compared to the northeastern belt. More than 90% of coal reserves occur in the valleys of the Damodar, Mahanadi and Godavari river. Which of the above are correct? Go. Pranati is going with option B. Medical department, option B Johnny. Anyone else? Option B. Only 2 is correct. Okay. Anyone else? चलो में उड़कू तो मिनरल्स विषय पढ़ला बेले गोटे जिनस यूट्यूब क्लास रे जतले आमे ओडिशा मिनरल्स विषय पढ़ले गोटे जिनस विषय कहली रॉक सिस्टम एंड क्लास रे तो आमे जियोमॉर्फोलॉजी अंडर रे रॉक सिस्टम को बहुत भल से पढ़ले राइट तो एथरे इंडिया रो रॉक सिस्टम को डिफरेंट कैटेगरी रे डिवाइड कराए कोन ना हमर होची आर्कियन रॉक सिस्टम पहला पुराना रॉक सिस्टम पहला द्रविडियन रॉक सिस्टम आउट होची आर्यन रॉक सिस्टम राइट इफ यू रिमेंबर मु एक कहतली ए दिटा कहूची प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम राइट 2.4 बिलियन इयर्स पर पुराना ये ठीक अछि ए सब जो रॉक सिस्टम्स रहिले ए रॉक सिस्टम से कोन हला ना डिफरेंट सब कैटेगरीज अछि यार आर्कियन नीसिस एंड सिस्ट ता सहित आमे देखुचे गोटे धारवाड़ रॉक सिस्टम पुराना अंडर रे कोन देखुचे गोटे देखुचे कडप्पा रॉक सिस्टम आ गोटे देखुचे विंध्यन रॉक सिस्टम जो धारवाड़ रॉक सिस्टम एंड कडप्पा रॉक सिस्टम धारवाड़ टाइम कोड देखुचे कर्नाटका राइट छोटा नागपुर प्लेटू रे हाईएस्ट में सोर्सेस अछि देखो हमकू कोन पचारची क्वेश्चन is not about the
highest mineral resource? Question देखो, diversity of the resources, that is the main aspect here. ठीक है जी. Now before we go into that, first एडा देखो, explanation देखो. ठीक है जी. So this Dharwad rock system एथिरे आमे देखिया पाउचे high grade metallic minerals. Metallic mineral. Indian system रे आमे देखिया पाउचे rather Kadapa रे low grade metal plus high grade non metal. India रे देखिया पाउचे non metal. ठीक है जी. Now एडा हैला हमारा distribution. Now ए जो धारवाड़ कडप्पा, these are part of the southwestern block. ठीक है जी. And Vindhyan टा हमारा से Vindhya region रे रहला सेडा छाड़ दियो. Then we have the Dravidian system जोटा हमें देखिया पाउचे ए जो दामोदर महानदी ये सब वैली पाखे देखिया पाउचे द द्रविडियन रॉक सिस्टम जोड़ा अंडर रे हमें पाउचे द कार्बोनिफेरस रॉक्स. सॉरी नॉट कार्बोनिफेरस, गोंडवाना रॉक्स जो थे कि हमें कौन पाउचे कोल पाउचे. राइट. तो दिस बिटुमिनस कोल जोड़ा हमें पाउचे एंथ्रासाइट नो बिटुमिनस से बिटुमिनस कोल इंडिया रे सबटो अधिक मिले एटा हमें ए पीरियड रे पाउचे. ठीक अछि. नाउ देन फर्स्ट होची एबे देखो this Dharwad region, Kadapa region, all of these belong to the southwestern plateau region. ठीक है जी. Now हमको question रे पचारची because the question is about diversified mineral deposits, not the amount of deposits. ठीक है जी. तो सेथि पई this will be the correct statement and this also will be the correct statement. Answer will be both 1 and 2. ठीक है जी. Not the northwestern part. Okay. क्या कुछ डाउट रही लगी? ओके क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स कोसी चेनाब सतलेज बियास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज एंटीसीडेंट रिवर. को कोडा वन आंसर दियो.
Okay, option C 1 and 3 and Satluj. Okay, so your answer here is correct, or option C is the correct answer. Okay, now rivers depending on the topography हमें river को different types divide करछे कोन ना गोटे होची concordant concordant को also कहती sequent river, discordant को insequent कहती concordant रे different types होची कोन consequent, subsequent, obsequent and sequent चारटा सब कैटेगरी then discordant रे हमें दीटा सब कैटेगरी देखो गोटे होची antecedent गोटे होची superimpose. Okay, now concordant river manangaro kono na they follow the topography, they obey the topography, while discordant rivers they don't obey the topography, they cut through the mountains and valleys to create their to maintain their path. तो सेही भलिया river रे example आम इंडिया रे कोन रहउची सतलेज, ब्यास, sorry सतलेज, then Indus and amara Kosi. Okay, so these are the rivers which are examples of antecedent rivers, and consequent subsequent तार example रे आसीबो amara कोन कोंती गंगा river system तापरे amara southern river systems एगुरा सबु concordant under रे आसीजो. ठीक अछि, चलो next question. Consider the following statements regarding rapid mass movements. First hochi earth flow refers to movement of water saturated clay or silty materials down gentle slopes or hillsides. Mud flows occur when intense rainfall saturates thick layer of weathered materials, allowing them to flow down channels like a stream. So earth flow definition, mud flow definition, and then debris avalanche definition. These are fast moving mass movements on steep slopes that occur on narrow tracks and are typically slower than mud flows. So which is or are correct? Go. Okay. A. So the correct answer is A. ये देखिए दवा और ये विषय मास मूवमेंट विषय रे. ठीक अछि, मास मूवमेंट कोन ना दिस इज द सडन दिस इज अ सडन मूवमेंट. ठीक अछि, जोटा कि कोन ग्रेविटी अंडर रे ग्रेविटी रा इन्फ्लुएंस अंडर रे तळु को आसे. ठीक अछि, डिफरेंट कैटेगरी रे इटा डिवाइड कराई परिबो. ठीक अछि, डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्वड दैट टाइप्स करिकी चारटा कैटेगरी रे फॉल, स्लाइड, टॉपल. ठीक अछि, फॉल कोन एमती गोटे हाइट रे थला एमती फ्री फॉल करबा को फॉल कहूचे. स्लाइड कोन गोटे स्लोप रे अछि ता ऊपर एमती स्लाइड करके जीवो सेटा होची स्लाइड. टॉपल कोन एमती सीधा थिला आगु को एमती पड़ी जीवो. ठीक अछि, एमती थिवो एमती डायरेक्ट पड़ी जीवो. these are the movements. ठीक अछि, नाउ नेक्स्ट होची हमर कोन ना फ्लो. फ्लो टा कोन ना गोटे लिक्विड टाइप रो मूवमेंट एग्जिबिट करिवो. ओके, नाउ एठी कोन
help करे presence of water, right? It does not have to be water driven, it has to be gravity driven. दो प्रयोग दरकार ता हिसाब रे ही हबो. So but it helps if we have water present here. Now a flow रे different types अछि. गोटे होची earth flow, गोटे होची mud flow. Okay. Then we have flow टा actually दीटा category रे divide करियो. गोटे होची flow, गोटे होची fast. फ्लो रे हमें देखुचे जो soil creep, solifluction, these are flow movements. Fast flow movements रे हमरा earth flow, mud flow, avalanche ए सब आसीबो. ठीक अछि. Now ता सहित भी गोटे अछि debris flow. Avalanche रो भी different categories. Debris avalanche हे परिबो, snow avalanche हे परिबो, right? Now हमकु पचारछि ए तीनटा विषय रे, right? Earth flow, mud flow and avalanches. Avalanches टा होछि the fastest, most rapid movement एथरे हो. ठीक अछि. Then mud flow रे कोन रहउछि? Mud बोली भाबियन जे mud बहुत ही चिकटा रहइबो. Here we have soil plus sand plus weathered material. So basically mud flow case रे we see कोन ना larger sized particles से माने move करछन. But in case of earth flow we see small, जोटा कि mostly clay थाए. Okay, clay material एटा ही तुमको देखा जिवो mud भलिया. ठीक अछि. जो mud भलिया हम जो चिकटा माटी ये करछे, because of the high presence of clay it will be slower, because अठालिया हे की रहबो, लाखी की रहबो ये चिकटा माटी भलिया. Then because this is larger and looser it will be faster, but this is the fastest movement. एठी कोन avalanche जदि हमें snow avalanche देखुछे सेटा तो तुम माने movies वगैरह देखिथिबो. सेही भलिया जदि rock and other materials fall down कला down a slope, then सेटा को हमें कहउछे debris avalanche. ठीक अछि. So this statement is incorrect. Earth flow refers to movement of water saturated clay or silty. Then mud flow re कोन thick layers of weathered materials allowing them to flow down a channel like a river of mud. So statement 1 is correct. Okay. Chalo next 16. Consider the following statements. Though the regions below the Tropic of Cancer in India are nearer to equator, they do not experience extreme temperatures. The maritime influence from the east and west sides occurring due to peninsular structure of the region makes the region's temperature relatively milder. Very simple question. या बेसी किसी डिस्कस ही करियार नहीं. आम जल्दी जल्दी 20टा पर्यंत आज पळेबा, because already it's near to 2 hours and तुम मन भितरे एनर्जी जमा जोना पडुनी होते. So let's finish this and we'll move on. Okay. और एक क्वेश्चन नहीं आज लास्ट कर दवा, 2 घंटा भीतर ही क्लास सार दवा आज. ओके. बाकी सब नेक्स्ट क्लास रे विल मैनेज. ठीक अछि. को एटार आंसर को ना मुंडो काम करनी हो. एटा बहुत ही इजी टा. एटा खाली कह देबी, देन विल स्टॉप हियर. ओके. Sagar is going with option A. Okay. Okay. चलो देखिए कौन. And though the regions below Tropic of Cancer are nearer to equator, they do not experience extreme temperature. Okay. So yes, the statement 1 and 2 both are correct. 2 is explaining this. कौन ना हमको बेसिकली एटारे कॉन्टिनेंटालिटी इफेक्ट विषय रे पचारछि. कॉन्टिनेंटालिटी इफेक्ट कौन ना due to difference in the specific heat capacity of land and water,
दीटा कर डिफरेंशियल हीटिंग हुए एंड कोस्टल रीजन रे वाटर टा कंपैरेटिवली कूलर थाए कंपेयर टू द लैंड एज अ रिजल्ट कौन हुए ना ओशन तरफ गोटे मॉडरेटिंग इफेक्ट पड़े टेम्परेचर टाकू अत्यधिक न करिया को दिएनि सी so the peninsular region even though it is closer to the equator जोठी कि अधिक insolation हुए because of the presence of ocean extreme fluctuations हुए high temperature हुए but extreme fluctuations हुए से जो extreme fluctuation जगह रे in case of winter कौन हबो टेम्परेचर बहुत कमी जीवा कथा लैंड रो बट ओशन टा टिके गरम रही है एज ए रिजल्ट मॉडरेटिंग इफेक्ट पकई टेम्परेचर टाकू मॉडरेट रखे बहुत कम करिया को दिएनी so we do not see extreme temperatures in the southern part but northern part रे कोन पाखरे ओशन नहीं as a result हमें extreme cold देखुचे extreme heat देखुचे ठीक अछि so here the answer will be option A आज एतिक रे रहितिबा ठीक अछि अधिक डिस्कस हे गला पॉपुलेशन विषय रे तमरो एनर्जी भी लो हे गलानी प्लस हमरो टाइम भी हे गलानी ऑलमोस्ट 2 आवर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखुची जदी कम समय रे सर जीवो देन वी विल डिस्कस दैट अदरवाइज वी विल गो हां एटा ठीक अधिक लागिवो विल डील विथ दिस लेटर ठीक अछि नेक्स्ट क्लास डोंट वरी जो क्वेश्चन गरा रह गला सेगरा हम नेक्स्ट क्लास रे ऐड करगी ओके लेट्स स्टॉप हियर चलो गो हैव अ गुड डे एवरीवन, a good day.